developments taking place in the national capital, where Aam Aadmi Party leaders, workers and its doctors wing protest over CM Arvind Kejriwal's arrest in the Delhi excise policy case, and the row over administrating of insulin to him in jail. Meanwhile, Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bhardwaj is set to meet the Delhi Chief Minister at the Tihar jail today. The meeting's purpose remains undisclosed, stirring curiosity and speculation among observers and the public. So, of course, viewers, there you see those visuals on your screens. This is the protest that we're, of course, talking about. Our leaders, workers and the doctors, they're protesting at this point of time. Of course, this is of course got to do with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Remember, viewers, this is of course the protest that's taking place. Meanwhile, AAP leader Saurabh Bhardwaj is expected to meet Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today at the Tihar jail. The reason for the meeting is still undisclosed. We don't know what the purpose of the meeting is, but of course, these are the developments that are coming in, a protest that has taken place. You can see, AAP leaders, workers and doctors over there standing with the banners in their hands. In fact, my colleague Arzu Seth joins us on the broadcast to give us more details on this. Arzu, protests are taking place. Saurabh Bhardwaj is expected to go and meet Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at the Tihar jail. Give us a comprehensive understanding on these developments. Well, yes, we are seeing that the insulin war is taking place in the national capital, where the Aam Aadmi Party has made a serious allegation on the Bharatiya Janata Party, saying that, the Bharatiya Janata Party has kept Arvind Kejriwal away from insulin for 23 days, and that's why today also they have held a protest at the ITO. They have made a human chain where Kuldeep Kumar, the East Delhi candidate from Lok Sabha election, were also present, and he in fact said that this is the conspiracy that the BJP is doing to murder the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. And the insulin is not being given to the Arvind Kejriwal. Even after a lot of attempts, even after a lot of trials, they have come to the streets, they have held a protest. Then the CM has got the insulin. So we can see how the BJP has plotted these all things, to deteriorate the health of the Arvind Kejriwal. But we are on the street. All the people of the Delhi will answer what is injustice that is happening with the Arvind Kejriwal through the vote by voting against the Bharatiya Janata Party in this election. Continuously we are seeing more and more regarding the insulin matter. But we will see what's coming up next, because the elections are also going on, and when the voting will be there in the national capital, the public will decide the mandate, and the public will decide who is true or who is false. Yes. Okay, all right, Arzu, thanks for joining in, sharing all those updates with our viewers. In fact, my colleague Arzu Seth, in fact, held an exclusive conversation with AAP East Delhi Lok Sabha candidate Kuldeep Kumar. Take a listen. Aam Aadmi Party today forming an human chain at the ITO, and several leaders are also detained by the police. Right now joining me Kuldeep Kumar, who is the Lok Sabha candidate. Sir, क्या हुआ था अभी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आईटीओ पे पहुंचे हुए थे ह्यूमन चेन बनाने के लिए, जेल का जवाब बोर्ड से मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अभी डिटेन कर लिया गया? देखिए, जेल का जवाब वोट से आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस षड्यंत्र के तहत दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, पूरी मंशा उनकी ये थी कि लोकसभा चुनाव से वो दूर रहें, लोकसभा प्रचार ना कर पाएं। लेकिन जब आप उनके लोकप्रिय बेटे अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, तो दिल्ली की जनता अब खड़ी हो चुकी है और वो कह रही है कि हम जेल का जवाब, तानाशाही का जवाब, महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब वोट से देने का काम करेंगे। और दिल्ली के लोग अब की बार 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने का काम करेंगे और अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लाने का काम करेंगे। कौन कौन लोग प्रेजेंट था, क्योंकि हमने देखा डॉक्टर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ मुद्दे डॉक्टर्स उठा? देखिए, डॉक्टर्स से अभी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एक मुख्यमंत्री की जान से जिस प्रकार से जेल में खिलवाड़ किया गया, 23 दिन तक उनकी जीवन रक्षक दवाई जो थी इंसुलिन, वो उनको नहीं दी गई। आप सोचिए कि हमें कोर्ट जाना पड़ता है कि मुख्यमंत्री को इंसुलिन चाहिए। अगर एक साधारण सा व्यक्ति भी जेल में जाता है तो उसका भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना जेल प्रशासन का काम है। अगर उन्हें कोई दवाई की जरूरत है तो जेल प्रशासन मुहैया कराएगा। लेकिन आप सोचिए कि मुख्यमंत्री की जान को आज कितना
कितना बड़ा खतरा उस जेल के अंदर है जहां पर उनकी जान लेने का प्रयास आज जेल प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी जेल प्रशासन के माध्यम से कराने का काम कर रही है। 23 दिन जीवन रक्षक दवाई से दूर रखा गया। जब हम कोर्ट गए, मेडिकल बोर्ड बना, हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको याद आई कि मुख्यमंत्री को इंसुलिन की जरूरत है। आप सोचिए कितने बड़ा षड्यंत्र दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और दिल्ली के बेटे के लिए ये करने का काम करें। दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे, इस जेल का जवाब वोट से देने का काम करेंगे। Thank you. So you heard Kuldeep Kumar, Lok Sabha candidate, and he said that the people of the Delhi will respond to what is happening with the Arvind Kejriwal inside the jail. He was kept away from the insulin which was needed for his good health. So this remains to be seen what the Delhi people will decide in the coming election. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.